Good morning and welcome back, friends, to another episode of the Midas Touch, the journey from Wealth Foundation to Wealth Mastery with Vikas Joshi. Friends, this is the complementing series to the other two series, the Golden Whispers, Vikas Joshi Inspires Aspirations, and the Money Mindset Mastery with Vikas Joshi. These two series are dealing with the change of mindset. We are preparing our mind to be prepared to accept the financial stability that we will be reaching. How? That is how we are moving on. So first of all, we started preparing our mindset. The mindset was to be changed from restricted mindset to the growth mindset. We have started the journey from financial accumulation to financial stability. And hence it was necessity that we simultaneously start the financial planning series, the Midas Touch, whereby we will be achieving the wealth mastery in the days to come. The basic thing that we have to understand are the basic concept in the financial series, financial goals. So that is what we are dealing with in this series, friends. Initially, we will be preparing our sound base so that as we proceed further and take a decision of financial investments, we will be prepared mentally also with the two series of growth mindset, and financially also, where we will be taking decision. Our journey will be from wealth foundations, that is what we are doing now, towards wealth mastery, that is what we will be reaching then. So when we are talking of in this series of the financial goals, I had touched upon two important definitions, friends: inflation and living standards. So these are, though they are interrelated, yet these are two big topics. I would try to summarize this and address important points that affect your daily life and why it is necessary that you should understand the impact of the word inflation and the impact of the word living standards you will have on your life. You will have while you are budgeting, you are preparing your budget of budgeting for your future. You will have to consider that. मैंने कर दिया, मेरे को पता नहीं, उसने मुझे बोला, मैंने कर दिया. That is what normally people are about, है ना? Whenever we ask where we are investing, no, my financial advisor told me and these and those. But have we understood? I agree that we require a financial advisor. I agree that we require an investment advisor so that we get proper advice. But whether the advice is proper, you should know the basics. Then only you can analyze whether the advice you are receiving was correct. Otherwise, you are just blindly following that investment advisor concept. Someone tells you he is an investment advisor and you start investing. सोचा था क्या तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है? And that is the reason why many of the times we hear or read in papers that there are so many frauds. है ना? अभी लेटेस्ट भी आया था. Some CA person had defrauded many people and got absconded. Some film personalities were also there. I came to know because it was in the newspapers and YouTube channels also. Why? Because they didn't have the basics clear. I do understand, I do agree that we should have an educated investment advisor, but at least the basic concept should be clear with you, so that when you are talking with your investment advisor, you should be aware what points he is talking on and what are the repercussions of your investments he is making into or whatever he is saying on. है ना? अरे वो बोल रहा है इसमें डालो उसमें डालो, वो सब सही है. थोड़ा बेसिक्स, आपका पैसा है, वो पैसा है. वो मैंने हमेशा कहा है, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है, पर जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. सो अगर हार्ड अर्न मनी है तो यू हैव टू टेक इट विथ नॉलेज. यू हैव टू इन्वेस्ट इट विथ कॉशन. सही जा रहा है कि नहीं देखना चाहिए. ये तभी पता चलेगा जब हमारी साउंड बेस रहेगा. वी विल अंडरस्टैंड टर्म्स, ये क्या चल रहा है. वो तो यूज करेगा, लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तुम्हारा इतना इंटरेस्ट रेट हो गया है. Now we have to understand इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट कैसे करता है. इन्फ्लेशन, तुम्हारे इन्फ्लेशन, सच अ बिग टर्म, हाउ इज इट अफेक्टिंग यू? You should understand.
एक आम तौर पे इंसान बोलता है, अरे मेरे 1 रुपए में इतना आता था तो अब इतना आ रहा है. Yes, correct. What is he doing? He's addressing the inflation part. But has he taken care of in his financial budget, financial planning? नहीं, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने उसे बताया ही नहीं. हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को बुला लेते हैं. Once you have some chunk of money you want to invest, you ask the investment advisor for some schemes and he tells you, you pay his fees, contract is over. But inflation doesn't stop there. It is going on, it is an ongoing process. अगले साल में इन्फ्लेशन बढ़ गया, अभी पिछले साल का इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन अभी बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट कम हो, हाँ इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मतलब आपका रिटर्न्स कम हो गया, मतलब द किटी इन विच यू वर टू रिसीव सम अमाउंट has been reduced because of inflation since the interest rate has been changed. सर बट लेकिन वो तो इन्वेस्टमेंट तो 2-3 साल के लिए होता है. एग्रीड, 3 साल बाद इन्फ्लेशन आने वाला है ना. हैव वी कंसिडर्ड दैट कि क्या करने वाले हो 3 साल बाद? दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दैट इज वेल्थ क्रिएशन. You should be monitoring your amount and you should be preparing yourself simultaneously. 3 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, एग्रीड, लेकिन 3 साल बाद अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो तुम्हारा रिटर्न्स बहुत कम हो जाएगा. तो आपने 3 साल में कुछ नहीं किया. इफ यू आर नॉट टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द चेंजेस हैपनिंग इन एंड अराउंड यू फॉर योर फाइनेंस, then you will be facing the heat after the 3rd year where this investment will be closed and you will have to renew it at the existing rate. वो तो पिछले वाला रेट नहीं देगा. अगर इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है तो उस रेट से तुमको फिर से इन्वेस्ट, अब प्रॉब्लम आएगा ना. तो द गैप into that was coming into your kitty has to be overcome during these 3 years, stage by stage. That is what financial planning is, and that is what we will be dealing it with today. I have taken out some points which will affect our daily lives because of inflation. Let us first understand what the inflation is. In some way, I have already explained it now. Yet, to define it, inflation is the rate at which the general level of prices for goods and services rises, leading to decrease in the purchasing power of money. हम लोग पहले भेलपुरी खा रहे थे 5 रुपए में, अभी 10 रुपए, फिर 25 रुपए, अभी 40 रुपए. ओह, दैट इज इन्फ्लेशन. अभी 5 रुपए में आपको भेल नहीं मिल रही है, सिंपल. लेकिन आपने प्रिपेयर किया था क्या? हाँ, मेरी नौकरी है तो मेरा पे स्केल्स वैसे ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन इज इट इक्वल और इज इट सफिशिएंट टू ओवरकम द इन्फ्लेशन? तो तुमने प्रिपरेशन करना चाहिए ना. दैट इज व्हाट वी आर डीलिंग विद टुडे फ्रेंड्स. सो इन्फ्लेशन इज टिपिकली मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. दीज आर द टेक्निकल टर्म्स which wherever the inflation is been measured. तुम कैसे मेजर करते हो? We will not be going into those technical terms, but let us understand the basic concepts. पैसा अगर तुम्हारा खर्चा हो रहा है लेकिन उसी पैसे में अगर कम प्रोड्यूस मिल रहा है तुमको, that is inflation. The best example मैंने अभी भेल का बताया. You may consider the basic requirements like milk. It is increasing. The money value you are paying for a half a liter milk has gone up. That is, in that particular amount, you are not receiving the same produce. You will have to pay more. That is inflation. So, understanding inflation is crucial for economic planning and policy making as it affects all the aspects of economy, including wages, savings, and investments. Now, that another half part, though it is dealing with the governmental policies, yet you should also understand that concept so that you should be prepared for the things. Whether you are going when in the market, consider 10 years back, you can ask your parents,
और यू मे बी हियर इन द कॉमन डायलॉग इन एवरी हाउस होल्ड, कितना महंगा हो गया है, पहले इतना नहीं था, हम तो इसको इतने में रुपए लाते थे, अभी देखो क्या मिल रहा है ना, ये कॉमन है, दैट इज इन्फ्लेशन। बट वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्व्स। तो हम क्या करते हैं, दो चीजें हो सकती है, आइदर वी आर प्रिपेयर्ड irrespective of the rising prices, we are ready to buy the same product as we wish for, or otherwise we have to give up on that product. महंगी चीजें अभी नहीं ले सकते, छोड़ देना, बाद में हम देखेंगे। I prefer that we be prepared than giving up the things, because living standards that I will be addressing in our next video. Let us first understand the inflation, impact of inflation in our daily life, and how we are preparing our budget for savings and the things. I will be telling you the points like area that is affecting you, how it impacts your financial planning, and what steps you have to take on, like just savings. बेसिक कंसेप्ट हम शुरुआत करते हैं, बैंक में जाता हूं, मैं सेविंग में पैसा डाला हूं, मेरा सेविंग्स क्या है? Is it only saving? No, I have invested. Okay, now you are invested. As inflation grows, it eroded the purchasing power, reducing real value of saving. क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया. In 1995, the saving interest rate was 6 to 10% somewhat. कभी जब हम बचपन में था मैं, तब लगभग 10-12% सेविंग पे इंटरेस्ट मिलता था. आज क्या है? 3%, 2%. Now the banks are also offering as per their products. तुम अगर सेविंग में इतना पैसा रखोगे तो तुमको इंटरेस्ट रेट हम इतना देंगे. That is what the banks are also coming up with. Again, परचेसिंग पावर कम हो गया, मतलब बैंक में डिपॉजिट ज्यादा रखना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए. नहीं तो बैंक इंटरेस्ट दे रही है 2 या 3% ऑन सेविंग. Higher inflation has affected the interest rate. So you have to invest in high yield saving accounts or inflation protected securities. ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें डालना चाहिए आपको पैसा. Though I am not advising in this episode, no, I am not at all advising. I am just referring the points. So please do not take this as an advisory on investments. No. This is just a reference. सेविंग में अगर पैसा कम मिल रहा है, then you have to plan for your, जैसे पैसे ज्यादा मिलेगा, नेचुरल है. लो कॉस्ट डिपॉजिट्स शुड बी कन्वर्टेड फॉर द हाई कॉस्ट. में तुमको चाहिए ना पैसा, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम जो भी रहेगा वो. So that is what your savings will have. So you should be prepared to generate more income so that your living standards, I will not talk about living standards, but so that you will be prepared to get the same product as you wish for. Now retirement planning. Now since you are retiring, your income source has been stopped. So your cost of living is high. So it is necessitating higher savings. सेविंग्स में अगर 2 to 3% मिलेगा तो क्या करना चाहिए? सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ बाय इन्वेस्टिंग योर रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स, योर रिटायरमेंट फंड्स इनटू द प्रोडक्ट्स दैट विल यील्ड यू द सेम अमाउंट ऑफ दैट विल हेल्प यू टू लिव ऑन और cope up with the cost of living. Fixed investments lower real returns as inflation increases. Inflation increase तो फिक्स डिपॉजिट का भी आपका इंटरेस्ट कम ही होता है, पीरियड ज्यादा रहता है. सो नाउ यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई. जैसे लोग आजकल करते हैं, स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, कमोडिटीज में डाल रहे हैं, रियल एस्टेट में डाल रहे हैं, करते हैं ना लोग. सो डाइवर्सिफाई द थिंग्स so that you average, you get the same product or same income as you wished for your living cost. Debt management. So the loans become cheaper in real terms, but variable rate loans can become more expensive. Credit card expensive है, personal loan expensive है, mortgage loan expensive नहीं हुआ है, but आपके mortgage का प्रॉपर्टी है. So these things
You have to manage, because after retirement or during the lifetime also, your much chunk of your money is going towards that. So your purchasing power is becoming less, because most of the part is going towards your EMI. So you should prepare fixed rate loans. है ना, आजकल वो पूछते हैं फ्लोटिंग चाहिए कि फिक्स चाहिए, कम होगा कि ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो लोन का रेट बढ़ने ही वाला है. So you should prefer the fixed. बाबा इतना है, इतना ही दे सकूंगा. That is correct. Then you are planning your financial plans, budgeting the things. Income stability. Salaries may not cope up with the inflation, decreasing the real income. मैंने कहा ना कि सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन whether it is coping up with the inflation, rise in inflation, that is the question that you have to answer. So salaries बढ़ गई, but inflation कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, salaries उतनी बढ़ी नहीं है. We always say that. कॉमन डायलॉग है हर एक के घर में, यार इतना काम करता हूं लेकिन उतनी सैलरी मिलती ही नहीं है. मतलब क्या है? मतलब ये है कि इन्फ्लेशन इतना है कि जो मैं चाहता हूं वो उसे खरीदने के लिए मेरे पास उतना उत्पन्न नहीं है, मेरे पास उतना इनकम नहीं है. सो यू हैव टू सीक एम्प्लॉयमेंट विद कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट्स एंड नेगोशिएट विद देम. ये है कॉमन. आजकल के तो सभी अक्रॉस द टेबल नेगोशिएट करते हैं. फॉर ईयरली सैलरी तुम्हारे कितना होता है, अभी कितना चाहिए, क्या होगा, बेस्ड ऑन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, योर रिक्वायरमेंट्स, देयर रिक्वायरमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट दैट इज व्हाट यू हैव टू नेगोशिएट फॉर, बिकॉज दैट इज अफेक्टिंग योर लिविंग स्टैंडर्ड, दैट इज अफेक्टिंग योर परचेसिंग पावर. एजुकेशन कॉस्ट हैज गॉन हाई. एवरी एजुकेशन रिक्वायर्स अ ट्यूशन, है ना, छोटा सा बच्चा भी जाता है वो क्लासेस करने के लिए चला जाता है. दे आर हाई, दे राइज मोर फास्टर देन यू कैन एक्सपेक्ट. आप सोच रहे होंगे, लेकिन कभी ट्यूशन टीचर को जाके पूछोगे तो रेट जो बोलता है वो दैट इज स्काई हाई. वेदर यू आर प्रिपेयर्ड. किटी आपकी सेम है तो परचेसिंग पावर आपकी कम होती जा रही है. That is what you have to address. So you have to plan. Education's plan also. You have to accordingly proceed for your education loans also. Higher education costly है, so education loan है, but you have to see the rate, the period, and then plan your things, because you have to live also within the same kitty. Healthcare costs have been rising, है ना. I always say, if you are carrying stress, it comes along with a benefit of a medical practitioner. Is it a benefit? No, it is a loss. Stress causes you mental loss, your physical gain loss, and hence your monetary loss. Hence you should be healthy. तो हेल्थ केयर कॉस्ट अगर बढ़ रहे हैं, सो हेल्थ केयर अकाउंट्स आपने कंसीडर करने चाहिए. देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स नाउअडेज दे हैव कम अप विद. मेनी इंश्योरेंस कंपनीज आर सेलिंग दिस हेल्थ प्रोडक्ट्स. You should consider those. Again, the purchasing power is affected. That is inflation. Housing, as I told you now only, you have to consider, negotiate with the interest rate. That is the basic part. You have to find out. There are so many that avenues available nowadays for housing loans. Any financial institution is prepared to give you the mortgage housing loan. But you have to work at the interest rate. Look at the interest rate. Negotiate the interest rate. Because that is directly affecting you. Don't be a राजा. हाँ मैं हूँ, हाँ तुम्हारा कितना है 18%. हाँ ठीक है मेरे को चलेगा. अरे नहीं चलेगा. When the market is giving you another 10% or 9% or 8%, why are you preferring 18%? अरे वो तो EMI से चला जाएगा, मेरी सैलरी में से जाएगा. अरे सैलरी में से तुम्हारे ही जाने वाला है. More when the other things are available, when the other institutions are ready to give you at a reduced cost, that is what you have to work on. You have to negotiate the things. Your everyday expenses, you have to work on.
इट कैनॉट बी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. मुझे लगा आज मैं समोसा खा लूँ, वो होता है. रोज समोसा खाना है, बिल्कुल खाना है, बट वेदर यू आर प्लान फॉर दैट. हेल्थ अच्छी है, फर्स्ट थिंग. एक्सपेंसेस उतना करने वाले हो रोज का, यस, बजट इट आउट. प्रिपेयर अ फाइनेंशियल प्लान, राइट इट डाउन इन योर डेली एक्सपेंसेस, एंड देन यू विल रियलाइज, अरे रोज इतना समोसा खाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं एक आध बार खा लूंगा. दैट इज हाउ वी एनालाइज एंड दैट इज हाउ वी रीच आवर कंक्लूजन. लिविंग स्टैंडर्ड्स. We are compromising, we are allowing ourselves to give up on certain things, though we wish that we should have. Now, that is what I had also addressed. The difference between wants and necessities. Samosa can be a want, it cannot be a necessity. So that will come along when you start planning your financial planning, writing down your daily expenses also, and you will realize that the inflation is playing much more part in your daily life of a financial planning. Your investment strategy should be so that you come up with various or diversified products so that you overcome the inflation part and your savings account or your kitty receives the same amount as you had wished for to live along for. मैं रिटायरमेंट से पहले ऐसा जीना चाहता था, अभी मैं ऐसा अरे ऐसा नहीं. रिटायरमेंट से पहले जैसे जी रहा था वैसे ही मुझे अगर आगे जीना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए. मुझे डेली एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे, मुझे सब कुछ देखना ही पड़ेगा. I cannot allow myself to be lethargic and idle, sitting idle thinking, हो जाएगा. नहीं, हो जाएगा नहीं. Work it out and start writing, friends. See the magic. लिख के देखो. नहीं, मेरे ब्रेन में सब कुछ है. तो नहीं, आजकल तो वो कंप्यूटर में होता है सब कुछ. नहीं, I prefer and I insist all of the listeners, please take a notebook, a pen and write down 10 रुपए का समोसा. आई डोंट नो वेदर 10 रुपीज़ में आता है कि नहीं. मेरे एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का समोसा, 5 रुपए की भेल, 20 रुपए का बस का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा, वॉट एवर यू हैव टू राइट डाउन एंड देन थिंक ओवर. व्हेन यू राइट डाउन यू विल रियलाइज कि अरे क्या है. खर्चा करते वक्त ध्यान में नहीं होता है फ्रेंड्स, बिकॉज एज वी गो टू द रेलवे स्टेशन टू बाय अ टिकट, नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड वो टिकट है कितने का, अभी तो आ गए, अभी लेना ही है. सो आप दे देते हो एंड देन वी टेल अवर माइंड, अब क्या करें, जाना तो जरूरी था, करना ही पड़ा. करेक्ट, एग्रीड. बट इफ यू आर प्लान दैट, then your investment would not have been affected. The inflation would not have taken over your desires of traveling comfortably. That is, maybe I can say as an example, मैं फर्स्ट क्लास से जाना चाहता था, लेकिन अभी तो जाना है जल्दी, चलो सेकेंड क्लास में ट्रैवल कर लेता हूँ. बिकॉज द डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ अ टिकट इज मच मोर. आई डिडंट प्लान इट, हेंस आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज इट. The emergency fund, as you are growing further, you have to put in some more with the inflation rising. We cannot say that अच्छा मैंने 10 रुपए रोज डालने का तय किया था, अभी तो क्या करूं, मैं 10 रुपए तो डालता गया. But the emergency fund, the very purpose will get defeated if it does not come to your help in times of emergency. So you have to consider your inflation, and जब ये लिखोगे तब आपको समझ में आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग में यार क्या क्या करना पड़ता है. इमरजेंसी फंड जो मैंने आपको पहले भी कहा था हमारा होना चाहिए, वो होना चाहिए. लेकिन अगर वो बिगर अमाउंट हो जाती है तो कोई उपयोग नहीं है आपके इमरजेंसी के टाइम में. इसीलिए प्लानिंग, इसीलिए कंसर्न कि यू अंडरस्टैंड हाउ इन्फ्लेशन इज अफेक्टिंग दैट. सो यू शुड कीप इमरजेंसी फंड इन हाई यील्ड अकाउंट. जैसे अभी मैंने कहा इन्वेस्टमेंट करने हैं आपको, तो इमरजेंसी फंड आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में डाल देना चाहिए जहां से आपको रिटर्न्स मिल रहा है, ज्यादा रिटर्न मिल रहा है. You have to plan the tax planning also as per your brackets, as per the statutory requirements, because inflation will be affecting that also. Since the income has risen, the tax bracket is also may rise. You will be paying more taxes. Are you prepared? अरे मैंने देखा ही नहीं था,
साल के बाद अंतिम में ही देखना था तो मैंने सोचा ही नहीं, अरे इतना मेरा पैसा चला गया। कई बार होता है फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर नॉट येट प्रिपेयरिंग अवर सेल्स। हेंस दिस एपिसोड टू अंडरस्टैंड हाउ इन्फ्लेशन इज अफेक्टिंग योर एवरी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, योर पर्सनल बेनिफिट्स that you wish for, that is a बेनिफिट आता है आपको, जैसे पेंशन बेनिफिट आ गया आपको रिटायरमेंट के बाद आता है ना। अगर इन्फ्लेशन राइज होता गया तो आपको उसमें भी राइज होना चाहिए। सो यू शुड सप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर पेंशन इन्वेस्टमेंट पर्सनल बेनिफिट्स विथ more savings, more investments, more return on investments, so that you live a life comfortably, or you live a comfortable life. You should have the insurance planning also. एक बार इंश्योरेंस ले लिया, अभी हो गया, मैंने इंश्योरेंस लिया है। Had you gone through what the insurance policy? What does it say? No. मैंने इंश्योरेंस एजेंट को बोला, उसने दे दिया, मैंने ले लिया। Whether it is helping you at your time of necessity, that is what you have to look into. Otherwise, you are paying more. So also the premiums you are paying towards insurance, if you are not planning them, then that is also affecting. So friends, inflation, a big term, but it is affecting your daily life in one way or the other. So the financial planning part, I had touched upon this definition, but today I have elaborately stated how it is affecting your every angle. I have taken most of the parts that in our daily life. I wish that you note down in your diary, your personal journal, what are your necessities and what are your wants. Put across them the value of each thing and where you want to accomplish them. If you want a certain thing, plan it out and then write down the value, future value, considering the inflation. You will understand it more clearly कि आपको कितना देना पड़ेगा. Don't just go on blindly for a loan, और देन आजकल ऑफर देते हैं, अरे ले लो सर, आज लेके जाओ, अब आप पैसा कहाँ जाने वाला है, आप हमको ईएमआई का चेक दे दो, अरे जाने वाला मेरा ही है ना, बट मैंने प्रिपेयर किया था क्या, वही तो देखना है. Whether I should pay more amount for the commodity which is not my necessity is the question we have to answer, friends. And it is important because it is affecting your daily life and it is affecting your future accumulation. Don't pay heavy things just because you want them. If your wants can be planned, your necessities will help you to live a comfortable life. नेसेसिटीज तो है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी पेमेंट करने हैं, टैक्सेशन देना है, स्टैट्यूटरी थिंग्स. योर वांट्स शुड नॉट मिंगल विद दीज थिंग्स. यू हैव टू प्लान आउट. इसीलिए मैंने कहा लिखो, राइट डाउन, प्रिपेयर अ लिस्ट, टेक अ टोटल, सम टोटल इट, and you will realize where you stand exactly. I cannot say it on daily basis, but at least on monthly basis, at least on quarterly basis, you should analyze so that you get yourself prepared for financial stability, for wealth creativity or wealth mastery. That is what we are gaining for, or that is what our aim is. So friends, be prepared. We are having this series for our preparing ourselves, stabilize ourselves for financial stability and wealth mastery. And this basic concept of inflation, when you are jotting down, will help you to reach or set up your financial goals. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Midas Touch with the living standards, how that will affect your daily income and how it is to be adjusted. I will be talking it off in the next series. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.